Good morning to all. Good morning, sir. Okay, how are you all? Good morning, sir. Good morning, sir. How are you all? Good. Very good, sir. Very good. Okay. And how was your MA 144 paper? Nice, sir. Nice. What about others? Good It's one. good. Okay. Palak, Dev, Drashti, Darshit, Karina, Nischal, Ramesh. Yes, sir. Yes. How was your paper? सर अच्छा गया पर थोड़ा एमसीक्यू में थोड़ा टाइम लग गया था. Okay. Okay. Parth. Yes, sir. Okay. How was your paper? Everybody. Good. Okay. So we will meet again for MA 251. Okay. Engineering Mathematics 3 in this semester. So today we are going to discuss about the syllabus of the our course MA 251, and then we go for the some fundamental concepts like derivative, integration, means revising. Okay, we will revise it. So I start with the syllabus. So you can see on your screen. So this is your syllabus MA 251 Engineering Mathematics 3. So in this syllabus is for two branches, civil engineering and mechanical engineering, and in this course we will have the 4 hours in a week. Okay, means एक वीक में आपको 4 hours पढ़ाया जाएगा ये कोर्स. 2 hours मैं पढ़ाऊंगा एंड 2 hours डॉक्टर योगेश्वरी पटेल पढ़ाएंगे. Okay, so the credit of this course is 4. So this is the main form of the our course MA 251, and the another main part of our course is 100 marks for this course, 70 marks for external examination and 30 marks for the internal evaluation as usual. जैसे हमने MA 143 MA 144 में किया था ऐसे. Is it clear everybody? Yes, sir. Anybody? Any problem? Any question? No, sir. No, sir. Okay. Then these are the objective of the course. Why you are studying this course? Okay, so these are the objective. There are many engineering applications of this course. So for example, in civil engineering, structure engineering. So this course is very useful in the structure engineering. So you will learn this course as a Yes, sir. part of, yes. Yes. Okay, so you will learn this course due to the application of this course in your branch. Okay, there are many applications other than the structure, but here listed out only one, so we will focus on this one. Okay, and there are many others objectives are there. These are the titles of our unit. So first unit is for Fourier series and its application. Then Laplace transform and its application will be your unit number 2, and the vector differential calculus is your unit number 3, vector integral calculus is your unit number 4, and curve fitting is your unit number 5. Okay, again this course is distributed in two sections, section 1 and section 2. So in section 1 you will learn about the unit number 1 and unit number 2, and unit number 3, unit number 4 and unit number 5 is included in section 2. Is it clear? Section distribution? Yes, Yes, sir. sir. Okay. I will teach you a section 2, that is the unit number 3, 4 and 5. And Dr. Yogeshwari Patel will teach you a unit number 1 and 2, that is the part of the section 1. Understand? Yes, sir. Okay, now we go for the detailed syllabus of our course. So in first unit,
Unit 1 is start with the periodic functions. Okay, then we will discuss about the Dirichlet condition, then the trigonometric series. Then in 1.2, Yogeshwari ma'am will discuss about the Euler's formula, Fourier series of periodic function of period P, then the Fourier series, discontinuous function and even odd function, then half range Fourier series. And again, as you know, the main application of Fourier series is the solution of the Laplace equation, heat equation and wave equation, which you already learned in our course 2, that is the MA 144. MA 144 में किया था ना, heat equation, wave equation and Laplace equation. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the final solution will derive by using the Fourier series. हमने जो किया था वो क्या था? Possible solutions थे. Now you have to learn about the final solution, means final solution of the equation, heat equation, wave equation and Laplace equation by using the separation of variable. Means जो हमने किया था वहां तक तो यहाँ आएगा ही आएगा, लेकिन some extension part of that. Okay. Then we go for the unit number 2, and in unit number 2 we will discuss about the Laplace transform as an improper integral and its existence, then Laplace transform of elementary functions and its properties. That means which are the elementary functions? Anyone have any idea? Elementary functions, कौन-कौन से elementary functions हो सकता है मैथ्स में? जो आप स्कूलिंग में पढ़े थे वो, whatever you learn in your school, है ना? Those functions are the elementary functions. For example, I say exponential function, so it is also elementary function. Then anybody? Sir, in trigonometry. Sorry, Trigonometry. trigonometric. Very good. Trigonometric, inverse trigonometric. Okay, so these are the elementary functions. So polynomial function भी है, तो उसका हम Laplace transform discuss करेंगे in 2.2. Okay, then again we go for the inverse Laplace transform. Okay, so inverse Laplace transform and its property we will discuss in 2.3. In 2.4 we will discuss about the first and second shifting theorem, that is the main theorem for the Laplace transform, and then we go for the derivatives and integrals, Laplace transform of derivatives and integrals. Then the main part of this unit is the convolution theorem, and this is a very famous property of the Laplace transform. It is known as the convolution, that is the convolution product, and from convolution product we define one theorem, that is the convolution theorem, and its application to obtain the inverse Laplace transform. Then we also discuss some Laplace transform related to unit step function, unit impulse function and periodic functions. Okay, then the main application of the Laplace transform is to solve the differential equation. Okay, जो हमने second semester में पढ़ा था उससे ये different method है. जैसे हमने second semester में differential equation को solve करने के लिए बहुत सारी method discuss किया था कि नहीं? Yes or no? We already discussed the many methods, unit number 1, unit number 2 and unit number 3 to solve the differential equation. Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes. Yes, Okay, sir. so we can also solve that type of differential equation by using the Laplace transform. So we will discuss in 2.7. Then main application of the Laplace transform we will discuss in terms of the mechanical vibration system and deflection of beams. This deflection of beams is related to your civil engineering. So we will discuss one application of civil engineering and one application for mechanical engineering in this 2.8. Now we discuss about our part. So I start with the unit number 3, vector differential calculus. So this unit is very light, okay, in terms of the scoring. Okay, आप अगर आप देखेंगे तो इसमें से बहुत कुछ आप पढ़ के आए हैं, तो वही हमको पहले डिस्कस करना है. Then we go for the advanced part. So first revision of the concept of vector algebra, scalar and vector fields. Then we go for the gradient of the scalar functions and the directional derivative.
then I think you learn about up to here directional derivative. Is it clear? Is it yes or no? यहाँ तक पढ़े हो आप? Yes, sir. है ना? Yes, directional derivative तक आप पढ़े हो. Then we go for the 3.3 divergence and curl of the vector field and their property. Then the physical interpretation of gradient, divergence and curl, and in terms of irrotational and solenoidal vector fields, we will discuss it. And in 3.5, we will derive the scalar potential function. How to find the scalar potential function? We will discuss in 3.5. Then unit number 4 is about the vector integral calculus. Okay, so in vector integral calculus, this is a wonderful application of the vector calculus. Okay, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने जो किया वो क्या था, सिंगल इंटीग्रेशन हमने स्टडी किया, मल्टीपल इंटीग्रेशन स्टडी किया, बट व्हाट अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फंक्शन? ओके, तो वेक्टर फॉर्म में है इंटीग्रल, तो उसको कैसे डील करेंगे? सो दैट there is a unit number 4 for this type of examples. So introduction to line integrals and examples, then statement and examples of the Green's theorem. Okay, introduction to surface and volume integrals, then we go for the statement and examples of the Stokes and Gauss divergence theorem. So you can say that in this unit only 3 main part, and the main parts are Green's theorem, Stokes theorem and Gauss divergence theorems, and 3 main part of this unit will also useful in your real life situation. We will discuss it. Okay, then unit number 5, it is about the curve fitting. For example, you have the graph, but graph is very wide. Okay, means उसको आपको sketch करना है, means थोड़ा उसको अच्छी तरीके से draw करना है. So how you can do that? So there is a concept. It is known as the curve fitting. Okay, so curve fitting we will discuss in unit number 5. Okay, so normal equation से हम start करेंगे, then we go for the fitting a straight line, how you can fit a straight line, then how you can fit a parabola, and then we go for the transformation of the curve. That means y is equal to a b raised to x, x y raised to a is equal to b, y is equal to a x raised to b. All this we will discuss in unit number 5. Okay, so is there any doubt, any question in this 1 to 5 unit? No, sir. No? Okay, then the main part and main question of yours is about the textbook. Okay, so in our course you can refer the book of Irving Krasing. Okay, so this is about the advanced engineering mathematics. So this book is very useful to you. Okay, but this is the international author. So if you want to refer the Indian author, then I suggest 2 books, B.S. Grewal and H.K. Das. Both are the very famous and very useful books for this course. So B.S. Grewal is higher engineering mathematics and H.K. Das is about the advanced engineering mathematics. And I say that these 3 books are also available freely available in Google domain. So you can download it, and if you don't find it, then tell me, I will share with you. Okay. Okay, sir. Okay, so this is about our course, engineering mathematics 3. Now any question, any doubt related to MA 251 course? No, sir. Okay, what about others? No, sir. Now next part of our today's session, it is about some important formula in mathematics जो हम use करते हैं, useful formulas you can say, okay, in mathematics. So we start with the derivative. So there are many formulas for the derivative and you know very well, but we are revising it. Okay, so d by dx of c into f of x means if you want to find the derivative of d by dx of 4x, how you can find it? What is that? Sir, Yes. 4 is outside and you will find the derivative of x. So it is nothing but 4. Yes or no? Yes. So this is the Yes, sir.
First rule, where c is any constant. Then you know about the derivative of x raised to n with respect to x. What is that? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या होता है? n x raised x to n minus 1. n into x raised to n minus 1. Yes, so d by dx of x cube. Let we consider x cube. So what is the derivative of this? 3x square. Very X good. square. Yes, 3x square. Okay, so this is about the second rule. Then the f into g of dash, that means product rule. How we can find the derivative of d by dx of x square into e raised to x? So how we do this? Sir, h square into d by dx e raised to h Very good. plus e raised to h into d by dx h square. Very good. Okay, we do this, but we don't write this step at that time. Okay, so here we have the x square. The derivative of e raised to x is e raised to x plus E raised to e x. raised to x, and the E derivative of raised x to square x. into 2x. 2x. Okay, so this is the product rule. Yes. Now, this is the chain rule. Chain rule means, for example, if you have d by dx of sine x square. So how you differentiate this function? सर d by dx sin x का मतलब करने था बाद में h square का Yes, very good. So sin x का क्या हो जाएगा? Cos m. cos है Cos x 2x. square into d by dx of x square. X square. Yes. Square का क्या हो जाएगा? So x 2x. square. 2x. So this is our the final derivative of this. So this comes from the chain rule. Okay? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay, now we go for the next. It is the d by dx of e raised to g of x. So e raised to g of x means if you have the derivative of d by dx of e raised to 3x. So we can differentiate this. 3 raised to 3x. Yes, that means 3 raised to x, 3x is as it is, and the derivative of 3x. Okay, so we have e raised to 3x into 3. 3. Yes, so Yes. this is about our rule. Next, f plus z, that means you know very well, f dash plus z dash, f minus z, then f dash minus z dash. So this is about the rule number, next rule. And then the famous derivative of mathematics is d by dx of c. Constant का derivative क्या होता है? 0. 0. 0. So this is the constant of the derivative of constant, so it will be 0. f by z of dash, तो क्या हो जाएगा? g स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर में हमको g स्क्वायर करना है, देन न्यूमरेटर में g into f dash minus f into z dash. For example, G dash. Yes. yes, if you think about d by dx of e raised to x by 2x, so how we can do it? Sir, 2x into d by dx e raised to x. यस, सबसे पहले 2x होल स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू x है ना, Raised to x. यस माइनस Minus यस e रेज टू x into d by dx of 2x. 2x. Okay, so the answer is 2x e raised to x minus 2x. e raised to x into 2 X. 2. Yes. divided by 1 4x square. square. 4x square. Yes. Understood? Yes, Yes. Okay. Now, same for the logarithm. So d by dx of log g of x. तो क्या हो जाएगा उसका? log की वजह से 1 upon g of x हो जाएगा, and g of x में जो भी होगा उसका डेरिवेटिव. अंडरस्टैंड? Yes. yes sir. फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, सो d by dx of
log of x स्क्वायर या फिर x क्यूब, जो भी लेना है ले सकते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले log की वजह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, सो इट विल बी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। X. डन। Yes. ओके, सो दीज आर दी वेरी यूजफुल। अब इसको मैंने सेपरेट करके लिखा है, देखो पोलिनोमियल कैसे होगा। सो पोलिनोमियल में सारी पोलिनोमियल है, देखो c दैट मींस c इंटू एक्स रेज टू 0, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, cx का c इंटू 1, x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 1 एंड c x रेज टू n का हो जाएगा n c x रेज टू n माइनस 1। ओके, सेम वे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, cos x का माइनस साइन, tan x का sec स्क्वायर, यहाँ पे sec का हो जाएगा sec x इंटू tan x, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then next one, inverse trigonometric function. You know very well and you learn about this. Okay, so derivative of sine inverse x. So what is the derivative of sine inverse x? 1 upon square root 1 minus x. Same way we can differentiate cos inverse x. तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, देखो मीन्स सॉरी डिफर बाय माइनस है, नॉट ऑपोजिट, डिफर बाय माइनस साइन। सो यहाँ पे एक का याद रखेंगे तो सेकंड का ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। Then same way you think about the tan inverse x and cot inverse x. So derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square and cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square. Same way we can remember by these two, that means d by dx of sine inverse x 1 upon mod x square root of x square minus 1 and derivative of cosec inverse x will be differ by minus sign. Is it clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then exponential function. Okay, so d by dx of a raised to x क्या हो जाएगा, a raised to x and log a, log a. d by dx of e raised to x क्या हो जाएगा, e raised to x. d by dx of log x क्या हो जाएगा 1 upon x. d by dx of log of modulus of x 1 upon x. यहाँ पे देखो x greater than 0 and x not equal to 0. इसे क्यों लिखा है, क्या बताएगा मुझे? सर लॉग में माइनस वैल्यू नहीं आती है इसलिए। Yes, very good, very good. So d by dx of log of x base a will be 1 upon x log a. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d by dx of, आपको ऐसे सोचना है, log of x divided by log of a. We can use the rule of the logarithm. So ये हो जाएगा done and then differentiate it. So ये तो constant है, so ये तो पूरा as it is रहेगा, log of a base e as it is रहेगा and log of x क्या हो जाता है 1 upon x, so 1 upon x. So you can do in this way also. Understand? Yes. सर ये लास्ट वन है, तो हम अगर ये ऐसा लिखे थे log x अपॉन log a, तो बेस हम कोई भी लिख सकते हैं, तो ई लिखना पड़ता है। नहीं नहीं, बेस e हो जाता है, जैसे आप if you use this property then it will be convert into the base e. मतलब अगर दोनों का बेस सेम रखना हो तो रख ही सकते हैं ना, थी log x बेस 2, दोनों में log a बेस 2। हाँ ले सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए क्या होता है, फिर log बेस 2 करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, log जो बेस आपने 2 लिया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? एडजस्ट नो करना सर। पड़ेगा ना, है ना? हाँ सर। हाँ, तो एडजस्ट मींस आप दो क्वांटिटी को इक्वल टू कब बोल सकते हो, जब वो दोनों सेम है। अगर सेम नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, सेम बनाने के लिए ट्राई करते हैं, देन वी कैन पुट इक्वल टू साइन। अंडरस्टैंड? सर ओके, तो ये जो क्वांटिटी है उसको इक्वल टू लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो उसको अलग कर दिया नीचे और यहाँ पे ऊपर x को ले लिया, दैट इज द इक्वालिटी। अंडरस्टैंड? यस सर। Okay, then
नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, यू नो वेरी वेल क्योंकि हमने ये सेम 2 में ही किया है ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक एक्स का माइनस सेक हाइपरबोलिक इनटू tan हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इनटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ tan hyperbolic x will be sec hyperbolic square x, and the derivative of cot hyperbolic x is minus cosec hyperbolic square x. Done? Any doubt in the hyperbolic functions, derivative of hyperbolic functions? No, sir. Okay. Then the integration. Okay, you know very well the integration and derivative both are the, bolo, Opposite. yes, Opposite of each other. reverse procedure है ना। Yes, sir. रिवर्स ऑपरेटर, सो वी कैन से हियर c into f of x dx जो हमने पहले किया था वही का वही यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। सो c into f of x dx, बट हियर देयर इज ए प्लस कांस्टेंट भी होता है, यस और नो? यस सर। एंड c एंड b, क्योंकि जब भी हम इनडिफाइनाइट फॉर्म मींस डिफाइनाइट है तो नहीं आता है, लेकिन इनडिफाइनाइट फॉर्म है तो वहां पे प्लस b आएगा। ओके डन। यूजुअल इंटीग्रेशन है तो वहां Yes, पे sir. यस बैलेंसिंग के लिए वहां पे प्लस कांस्टेंट आता ही है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में a to b f of x dx, तो आपको पता है यू कैन डू f b minus f a where capital F represent the integration of f of x, then a to b c f x you can do very well. Okay, this one is very important, integration a to a, इसका आंसर 0 क्यों आया? सर लिमिट सेम है ना तो मतलब Yes. माइनस Limit होगा। same है इसलिए हाँ. Yes, so if you A have minus A same equals to 0. limit, yes, if you have the same limit, then the answer will be 0. And if you change the limit, then answer is differ by minus sign. यस सर। Yes. Okay. Yeah, And yes, sir. Yes. next the advantage of the integration is you can split it. That means integration a to b f of x dx. Then if you have the intermediate point c, then a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx. You can do in this way. Okay. यस सर। Okay. Yes, And sir. next, if f of x greater equal to 0, then the integration is also greater equal to 0. So what is the meaning of this? Means अगर function non-negative है ना, then the integration will also be non-negative. Okay. Okay, sir. Okay. And same, if f of x greater equal to g of x, then if you apply the integration, then it also follows the inequality. That means f of x अगर g of x से बड़ा है तो उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा ही रहेगा। Understand? That is यस the सर। meaning of this statement. Then integration of f plus g, then you can split it. That means integration of f plus integration of g. Now integration a to b f of x plus or minus g of x dx, that means a to b f of x dx plus or minus a to b g of x dx, ये तो हम जानते हैं, ये वही का वही, मीन्स इसमें लिमिट्स नहीं है, इसमें लिमिट्स। ओके, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ इंटीग्रेशन a to b c dx, सो c कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड, एंड यहाँ पे a to b dx बचेगा, एंड वी नो वेरी वेल द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x. Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. we have c b minus a. Okay, so this is about the integration. Then we go for the common integrals, that means polynomial के लिए कैसे करते हैं? You can see here, इसमें ये थोड़ा सीखने लायक है कि इंटीग्रेशन 1 upon ax plus b. So 1 upon ax plus b में क्या हो जाएगा? log का ही लगाएंगे यहाँ पे, so log ax plus b. But for the adjustment, and we know that the derivative of ax plus b will be a, so you have to divide by a. Okay, understand? यस सर। Yes. Okay, बाकी के तो आपको पता है। ओके, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हो जाएगा साइन, साइन का माइनस कॉस, सेक स्क्वायर का tan u है ना, सेक इंटू टेन का सेक, कॉसेक इंटू कॉट का माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर u का माइनस कॉस कॉट u,
tan u का log sec u, cot u का log sin u, sec u का log sec u plus tan u, and sec cube u का हो जाएगा sec u tan u plus log sec u plus tan u. ओके, cosec u का हो जाएगा log cosec u minus cot u, and cosec cube u का हो जाएगा this one. Okay, so you all are familiar with this, yes or no? Yes, sir. But this will be helpful in our course MA 251. Okay, next, exponential and logarithmic function. So integration of these two functions. So integration of e raised to u, we know very well it is e raised to u, but plus c comes for the balancing, that means integrating constant. And integration a to u du means a raised to u upon log a plus b. Integration log u du is equal to u log u minus u plus c. Then integration e raised to au into sin du, both these integration will be helpful in our MA 251 in the unit number 1 Fourier series. Okay, this will be very useful. In each example you have to deal with this integration. Okay, so keep in your mind, integration e raised to au sin du will be e raised to au upon a square plus b square, a sin bu minus b cos bu plus c. Integration e raised to au into cos bu du is equal to e raised to au upon a square plus b square, a cos bu plus b sin bu plus c. Okay, and the integration of log u du, you know very well, u log u minus 1 है ना, plus c, and यहाँ पे u into e raised to u minus 1 e raised to u plus c. Integration 1 upon u log u means log of u plus c. यहाँ पे हम क्या कौन सा यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन, f dash x into f of x dx, नहीं, yes, divided by f of x. सर Yes. f of x upon f dash of x. Yes, उल्टा हो गया. Yes, f of x upon f dash x. Yes, नहीं, इसमें सर u f of x और upon, हाँ बोलो, नहीं ये नहीं होगा, ये शायद गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम f of x लेंगे फॉर एग्जाम्पल log u है ना, यहाँ पे log u है, सो 1 अपॉन u उसका डेरिवेटिव हुआ, तो यस f dash x अपॉन f of x आएगा, मैं सही लिख रहा था. ओके, डन. f dash x अपॉन f of x, यस बोलो, नहीं सही है. हाँ ये सही है. ओके, मीन्स मैंने जो पहले लिखा था दैट इज करेक्ट. f dash x अपॉन f of x dx, उसकी हेल्प से ही आएगा. और ये वन बाय वन. Any doubt, student? Dharma? Any problem? Okay. Then integration. Any problem, student? Anybody? No, sir. Okay. No, sir. Then next integration. Integration 1 upon square root a square minus u square du, it will be sin inverse u by a. Okay, तो ये तो सारे क्या कर रहे हैं, सेम है ना. इंटीग्रेशन जो हमने डेरिवेटिव किया उसका पूरा उल्टा करना है. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना. तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर. वही का वही है पूरा, सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला में, ये तीनों फॉर्मूला में सेम नहीं होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज है. तीनों में तो आपको वही करना है. इसमें साइन इनवर्स यू में क्या हो जाता है, u साइन इनवर्स u प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर प्लस c करना है. टेन इनवर्स u में भी सेम तरीके से, है ना, सेम वे यू कैन डिफाइन दिस फॉर्मूला. एंड कॉस इनवर्स u में भी सेम है. यहाँ पे सिर्फ प्लस है, यहाँ पे माइनस है. अंडरस्टैंड? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. I will share this PPT to you. Okay, don't worry about it. Hyperbolic trigonometric function, ये तो बहुत ही सिंपल है. इसका इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा cos sec, जो ये भी पूरा रिवर्स प्रोसेस है, एज इट इज लिखा हुआ है. देखो, यू कैन सी इन ईच फॉर्मूला. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके. एंड सम मिसलेनियस इंटीग्रेशन. मिसलेनियस में क्या होता है कि
हम ज्यादातर फेमस नहीं है लेकिन हम कभी कभी यूज करते हैं, है ना, और थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे आप इंटीग्रेशन 1/a² माइनस u स्क्वायर du करेंगे तो 1/2a, यहाँ पे ये देखो वहाँ पे a था से, यहाँ पे 2a ln u प्लस a अपन u माइनस a प्लस c। सेम तरीके से हम 1/u² माइनस a² को भी डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस u स्क्वायर du, यू नो वेरी वेल, ये भी हमने यूज कर दिया है, ये भी हमने यूज किया है, ये भी किया है ना। ये हम नहीं किया था तो हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2au माइनस u स्क्वायर, देखो यहाँ पे u का 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो तब क्या करेंगे, सो u माइनस a अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2au माइनस u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 cos इनवर्स a माइनस u अपॉन a प्लस c। ओके, एनी डाउट इन दिस स्लाइड, एनीबॉडी? नो सर। अदर्स? No, No, sir. sir. ओके, एंड नेक्स्ट हम जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया ट्रिगोनोमेट्रिक्स फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल साइन a प्लस बी, ये भी बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज है। a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हम इसको याद रखते हैं sc प्लस cs, इसको याद रखते हैं sc माइनस cs, इसको याद कैसे रखते हैं, cc माइनस ss, यहाँ पे cc प्लस ss, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, उस हिसाब से सारी जो भी हम स्कूल में करके आए हैं, वट एवर वी लर्न इन स्कूल, आई मेंशन ऑल दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इन दिस स्लाइड। ओके, एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay, so that is about today's session. Now, is there any doubt, any question in today's session? No, sir. No, sir. I want confirmation from all the students. Please confirm yourself. नो सर। Okay. No, sir. बस 2 ही लोग हैं क्लास में? No, sir. No doubt. Okay. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay. No, sir. No doubt. Okay. So we will discuss unit number 3